I want to show us his face that he's making. Is that funny? It's supposed to be funny. अस्सलाम दोस्तों, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इजी मैथ की कोई 2 से 3 एक्टिविटीज़ शेयर करूँगी। इसके अलावा वी आर आल्सो गोइंग टू डू नेचर एंड सम हिस्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट विद द मैथ्स फर्स्ट। ओके, सो दिस इज़ आवर फर्स्ट मैथ एक्टिविटी विच इज़ वेरी ईजी वन। या को मैंने पहले भी करवाई हुई। अगेन ये वाली एक्टिविटीज़ जो प्लेस वैली की जगह जो मैं करवाती हूँ, दिस इज़ जस्ट फॉर फन, टू मेक इट बिट मोर फन, क्योंकि प्लेस वैली इज़ अ बिट ऑफ अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, सो आई डोंट वांट टू स्ट्रेस हिम आउट। सो इस तरह की एक्टिविटी से थोड़ा चिल हो जाता है। सो बेसिकली अगेन ये ऑर्डर में रखने वाली एक्टिविटी है। दीज आर द फिंगर कार्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इनको मैं आई विल जस्ट मिक्स इट अप एंड देन आई विल गिव इट टू याया टू अरेंज देम इन ऑर्डर। So our second activity for this is to just mix up 2 cards. जैसे कि ये मैंने यहाँ से लिया and I will just mix them up like this, and then I will ask Yaya to put them back where they belong. Is the caterpillar also going to do school with us? Yes. So the next activity is to arrange them in order. ठीक है? And then मैं इनमें से कोई 2 mix up करूँगी। Yaya अभी नहीं देख रहा। Okay, Yaya, can you fix the problem? There are 2 cars that are mixed up. Now that was easy, so easy for Yaya. So for our next activity, मैंने अपने schedule में तो नहीं लिखा हुआ था, लेकिन I just wanted to do it anyways क्योंकि मैं चाहती थी इनकी revision दोबारा से हो जाए, क्योंकि आगे we're going to use these. Yaya, come sit here, sit over here, please. And I'm going to say a number, so it's just very basic, simple activity. I'm just going to say a number and Yaya is going to pick the card and show me. Can you show me where 3 is? I'm going to start with the easy one. Good. Thank you. Now can you show me where 6 is? Good work. Can you show me 1? Nice. Then 8. It's a bit hard one. And I know it's not that hard. 8. Good. Wow, I didn't know you knew. 7. Nice. 9. Good. What about 2? 0. चल ये सेट हो गया है बीन बैग पे। एंड ये सामने हमने साइड वर्ड्स जो हैं स्टोन्स इनके उनके थ्रू उनको भी अब सेट देम हेयर। एंड साइड वर्ड्स वाली वीडियो मैं आप लोगों के साथ ऊपर लिंक में शेयर कर देती हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर देती हूँ। गाइस कैन गो एंड चेक द डिटेल्स। सो बेसिकली दीज आर साइड वर्ड्स एंड आप लोगों को याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी साइड वर्ड्स पे। मैंने उसमें बड़ी डिटेल लिखी थी कि साइड वर्ड्स उसमें बताई थी, बेसिकली बात की थी साइड वर्ड्स के बारे में, वो क्या होते हैं। उनको हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स भी होते हैं उसमें, एंडोल्ज वर्ड्स भी होते हैं, ये क्या होते हैं, सारी डिटेल मैंने बड़ी अच्छे तरीके से आप लोगों को बताई थी, आप लोग को अच्छी भी लगी थी। सो अगर आपने नहीं देखी तो मैं ऊपर लिंक में भी शेयर कर दी थी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दी थी। गाइस कैन गो एंड चेक इट आउट। बट एनीवेज ये पुरानी बात है, तब यही आई थिंक 3 साल का भी नहीं हुआ था। तो आई थॉट उस टाइम पे कि याया वाज नॉट रेडी, तो हमने फिर वो स्किप कर दिया था साइड वर्ड सिखाने वाला कौन जो आइडिया था। बट नाउ आई थिंक ही इज़ 5 years old, so I think we can try again if he is ready. I think he can do it now. So we're gonna do just the same way जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था। 5 साइड वर्ड्स हमने चूज़ किए। अगेन इट्स बिकॉज याया इज़ 5 years old, so he is ready for 5. अगर आप जल्दी करवा रहे हैं, 4 साल का बच्चा है या नीचे है, तो मे बी यू कैन स्टार्ट विद 2 साइड वर्ड्स और 3 साइड वर्ड्स। तो वी कैन सिंग अ सॉन्ग। Jaya, do you remember the song that we used to sing for side words? These words. It was A and away big blue. Okay? Yes. Look here. I'm gonna point to it and I'm gonna sing. And look at them. A and away big blue. A and away big blue. Okay? You know what is this? Why am I saying these words? Because this is the name of these words. This is A and
away, big, blue. Okay, so Yaya is going to sing with me. Can you sing with me? A and away, big blue. A and away, big blue. Let's do it again. A and away, big blue. A and away, big blue. Do it again. Blue. A and away, big blue. Good. So soon what I'm going to do is, basically I'm going to take like the whole week for these words, and बाकी फिर मैं जो हफ्ते में एक्टिविटी करूँगी मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी. बेसिकली आप साइड वर्ड्स वाली वीडियो देखें ना, तो उसमें वो एक्टिविटीज़ भी मैंने मेंशन की हुई है जो मैंने क्या करनी है. तो इफ़ यू वांट टू डू इट क्विकली आपने करनी है तो प्लीज़ गो सी दैट वीडियो. लेकिन आई एम गोइंग टू डू द एक्टिविटीज़ ओवर द वीक. Yeah, so that was for English. Hey guys, so Yaya is quite busy. That was finished. Okay, so let me just tell you, friends, where is that history book? The history and जो है ना क्या नाम है? This one, nature. So hard. क्योंकि इनकी जो stories है ना, just too hard to समराइज करके याया को बताना. आई एक्चुअली रोड इट डाउन अ बिट रफली, क्योंकि जब हम बीच बीच में रुक रही होती है ना स्टोरी सुनाते हुए याया को वहाँ से पढ़ के, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता है. नो वी शुडंट, वी कैन हैंग इट ऑन द वॉल. सो मैंने आज हिस्ट्री में बेसिकली, कैन आई शो योर फ्रेंड्स व्हाट वी हैव टू डू इन हिस्ट्री टुडे? आई स्टिल हैवंट प्रिंटेड द पिक्चर लास्ट वीक, just too occupied. But आज I will take this off. It's only a story. Yeah, okay. So आज वीक थी कि हमने ये करना है कि कोई स्टोरी हुई जो आपने पूरे हफ्ते में बच्चों को डिफरेंट उसकी बेबीज़ की स्टोरी सुनानी है कि जो बेबी था तो क्या क्या होता था. तो वो बेसिकली यहाँ पे बच्चा कोई भी एक स्टोरी उसको अगर जो पसंद आई है, कोई याद है, तो यहाँ पे उसको ड्रॉ भी कर सकता है कुछ उसके अंदर. यहाँ पे थोड़ा स्टोरी वो मुझे बता सकता है जो मामा ने उसको बताई थी यहाँ पे लिखने. यार हमने शुरू करना था तो यार को अचानक हुआ कि यार मैंने अपनी कोई स्टोरी जो है ना उसको बनानी है, तो उसने पूरी पिक्चर को ड्रॉ की है. एंड देन मुझे कहते हैं एक स्टोरी है, मैं आपको बाद में बताऊँगा इसमें. What is this, Yaya? A bird inside a bird house. What is this? Is this? Okay. Is that the post mailbox? No. Oh, that's the mailbox. Okay, guys, I will just let Yaya finish this. जो भी उसने जो स्टोरी चूज़ की थी, जो मैंने उसको सुनाई थी, उसमें से एक स्टोरी उसने चूज़ की है. बड़ी अच्छी उसने बनाई. मैं आपको दिखा नहीं सकूँगी, लेकिन ये है कि yeah, that's what he's doing right now. चलो आज की स्टोरी शुरू करते हैं. So today's story is Peter and Jumper are gonna go to their teacher again, and what rabbit are they gonna learn about today? Where's the book for it? So they came to their teacher, and the teacher told them, yesterday we were reading. I was telling you about your cousin. Today I'm gonna tell you about your new cousin. You know what's his name? No. Swamp. He's a swamp rabbit. Why is he a swamp rabbit? You know why? This is a swamp rabbit. Let me show you. Let me show your friends as well. I don't know if they can see. That's a swamp rabbit. Yeah. See? That's a swamp rabbit. See how big he is? Look at his ears. Yeah. He's huge. And do you know why he's called a swamp rabbit? Because he lives in swamps. That's a swamp. I think he's looking at me. There's water, yeah, and ground. There, they live in that area. Let me show your friends as well. So this is called a swamp. Looks a bit scary. I'm a bit scared of places like those. Why is it board in? Okay, so this is what we're doing basically. You guys know कि हम शुरू से इसमें एनिमल्स बुक्स ऑफ चिल्ड्रन में अभी तक हम सिर्फ रैबिट्स को डिस्कस कर रहे हैं कि रैबिट्स की क्या क्या टाइप्स होती हैं. हेयर भी होता है. जो पहला था वो स्वाम्प हेयर था. तो स्वाम्प हेयर का बस यही चीज़ है कि वो स्वाम्प्स में रहता है. स्वाम्प वो जगह होती है जहाँ पानी भी होता है, साथ एंड लैंड भी होता है. एंड स्वाम्प हेयर जो रैबिट होता है, ही बेसिकली लव्स टू स्विम. फिर उसका कुछ टोज़ का बताया हुआ उसमें डिटेल है, कैसे उसके टोज़ दे आर वाइडली स्प्रेड इसलिए होते हैं क्योंकि उसको स्विमिंग में आसानी होती है. इसके अलावा जब उसको कोई प्रेडेटर कोई अटैक करता है, कोई एनिमल, वो प्रेफर करता है कि मैं तेज़ भागूँ. इवन दो ही इज़ अ गुड स्विमर, लेकिन वो प्रेफर करता है क्योंकि वो ही कैन रन रियली फास्ट. फिर हमने एक दूसरा रैबिट जो डिस्कस किया वो था आर्कटिक हेयर, जो कि नॉर्थ साइड पे रहता है, ठंडी जगह पे रहता है.
तो उसके बारे में ये चीज़ थी कि वो बहुत बड़ा होता है बाकी रैबिट्स के, ही इज़ लाइक रियली ह्यूज एंड रियली बिग। और उसके बालों के बारे में थोड़ा सा ये था कि उसके बाल बहुत स्मूथ होते हैं, तो उस वजह से वो शायद अपीयर थोड़ा छोटा होता हो, क्योंकि दूसरे जो रैबिट्स होते हैं उनके थोड़े खड़े होते हैं, तो इसलिए वो बड़े लगते हैं, लेकिन एक्चुअली द आर्कटिक हेयर जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो ये अगेन कैमोफ्लाज वाला थोड़ा सा इसमें है, एनिमल एडेप्टेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो प्रेडेटर से बचने के लिए, हाउ दे हैव अडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट। बट एनीवेज इस तरह और उसकी थोड़ी चीज़ें थी, तो आप ज़रूर वो स्टोरी पढ़िएगा और बिल्कुल उसमें से काफ़ी चीज़ें मिस करके ना बस मेन पॉइंट्स अपने वर्ड्स में मज़े की बना के स्टोरी ना बच्चों को सुनाने की कोशिश करें। या तो दिस इज़ द एक्टिविटी नाउ। इसमें एक्चुअली आया कि स्टोरी थोड़ी और लंबी थी, लेकिन मैंने सिर्फ 2 स्टोरी सुनाई, स्वाम्प हेयर की एंड आर्कटिक हेयर की। एंटीलोप जैक के बारे में भी था, मुझे लग रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा है बच्चे के लिए ना। तो you can choose one of these and put a tick beside them. Do you want to draw the swamp here or the Arctic here, the one that lives in the north? This is the swamp here. Do you want the swamp here? I want this one and this one. But do you want to draw both of them? Yeah. Can you draw them? What? Rabbits? Or whatever you want about them. The place where they live, the moss. Or the snow. Do you want to draw the snow? Yes. Okay, so which one did you choose then? Swamp here or the Arctic here? Both of them. You want both of them? Okay, let's do it. Okay guys, so that was it for today and I will see you guys tomorrow inshallah. Fi amanallah.